Hey everybody! The time is 7 p.m. and it means the time is for the second session of Heat. Before I begin, I have a question to ask you. Look at this. What's behind me? There's a metal plate and there's a plastic plate. If you keep both of them in your refrigerator and then take it out, which one will feel colder? And I know where this is going. Which one do you think is going to feel colder to your hand? Tell me, go on. Hello. Hello. Yes, I'm also very happy. Come on, everybody, let's answer. Let's answer. Which one do you think will feel colder to your hand? Come on. Yes, first one. A says first one. All right. Voice is very low, is it? Both. Plastic. You can try it. बीच में एक प्लास्टिक का प्लेट रखना और एक मेटल का कुछ भी रखना, कटोरी, प्लेट, whatever. And when you take it out, notice the metal one will feel very cold. When you keep ice on both of them, in which case do you think ice will melt faster? To your hand, the metal plate is looking colder. If you keep ice on both of them, in which case do you think ice will melt faster? It's a nice trick which you can pull off with your friends. Come on, think about it. Yes? Plastic, steel, metal. Alright, it's not clear. Hello, good evening. Let's see. Everybody, notice. It's a time lapse. And like this, there are many questions we all need to get the answer of. If you keep a metal spoon, it feels hot when you dip it in a cup of coffee, है ना? Cup of coffee, cup of tea. Metal का spoon गर्म हो जाता है, plastic का नहीं होता है. Plastic की चीजें जल्दी गर्म नहीं होती, ठंडी नहीं होती, ऐसा क्यों होता है, right? The answer of all these things lies in one small concept. We call it the transfer of heat. So, welcome to today's session on your very own BYJU'S 6th, 7th and 8th channel. The answer for the first question was metal plate pe ice will melt faster. Good evening, everybody. I hope I'm clearly audible and clearly visible. Some of you were saying the voice is low. Come on, give me a thumbs up. If voice is fine, I'm clearly visible. A heads up right now. Yes, I'm good. I'm good. How are you? Everybody, come on. Voice ठीक आ रहा है? सही दिख रहा है? Voice is low, huh? Is it? Hello, hello. It's echoing, no? The voice is echoing a little bit, but it's clear. See, I'll tell you. Whatever I say, no, I'm hearing it on my phone. Put your earphones and it'll be helpful. I'm telling you. Okay, bachcho, come on. Let's move forward. Transfer of heat. Maximum questions of your class 7th come from this topic. Olympiad पूछो, class 7th के final exams पूछो, whatever you want to ask. Transfer of heat becomes very, very important because the first session, it was kind of a basic session. Na? Heat versus temperature. What is heat? What is temperature? Clinical thermometer, laboratory thermometer. We discussed all of this. Today we are going to discuss that heat. What is heat? First of all, tell me. I explain it to you. What is heat? It is the total energy contained in the body, right? It is the total amount of kinetic energy, the motion with which the molecules are vibrating. That is what we call as heat. Temperature क्या था? Degree of hotness or coldness of a body. Correct? Heat energy है. Temperature is a measure to tell how much hot or how much cold an object is.
टेम्परेचर अलग है, हीट अलग है. हीट एनर्जी है एंड एनर्जी कैन फ्लो. हीट कैन फ्लो एंड दैट्स व्हाट वी कॉल एज द ट्रांसफर ऑफ हीट. ओके, यस. मेंटी, नो मेंटी इज नॉट देयर टुडे. गर्मी, हाँ, बहुत बढ़िया. अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेरी गुड. Heat, if it's a form of energy, means it can flow, and that's what we call as transfer of heat. If we tell you, आप daily life में क्या thermometer use करते हो रोज? नहीं. But every day, transfer of heat is a part of your life. Tell me yes or no. And can you think of examples? Can you think of examples where transfer of heat you see it every day? And I'm telling you, you see it every day. You tell me where. तुम रोज देखते हो, you experience it where? Yes, are right. Capillary tube, yes, that's a thermometer. By conduction, radiation, correct, Anushka, you're right. Transformation of light, yes. Stove, रोज खाना खाते हो, किचन में तो जाते ही होगे. You every day at least you go into your kitchen. खाना तो बनता ही होगा, ऐसा तो नहीं है खाना नहीं बनता होगा, right? So if food is cooked in the kitchen, it is what? Transfer of heat. If you boil water, transfer of heat. If you go out in the sun, transfer of heat. Everything is transfer of heat. रोज इतना सारा transfer of heat होता है, थोड़ा पढ़ लेते हैं, right? So today let's discuss about transfer of heat. Everybody, heat energy. अब heat energy if it is going to flow, कौन किसको देगा? You tell me. कौन किसको heat energy देगा? Let's say you have one person who is very rich, one person who is very poor. अगर पैसा ट्रांसफर की बात आएगी, who do you think will give money to whom? क्या गरीब आदमी अमीर आदमी को पैसा देगा या फिर अमीर आदमी गरीब आदमी को पैसा दे सकता है? देते नहीं है लोग, वो अलग बात है, बट दे सकता है. कौन दे सकता है? You tell me that first. A rich person can give money to a poor person or a poor person can give money to a rich person? Obviously, the answer is quite simple, है ना? Obviously, rich to poor. Whoever has excess of anything, you can share it with people, है ना? That's what happens in heat. A hot body has a lot of heat, है ना? Hot body बोलती है मेरे पास बहुत heat है. एक cold body बोलती है मेरे पास बिल्कुल heat नहीं है. ले लो मेरे से. So when you put both of them together, heat transfer happens, right? So heat is a form of energy, and heat always flows from hot body to cold body. As simple as that, है ना? Correct? As simple as that. Very good. Until when? I'm saying heat transfer will happen from hot body to cold body. Until when? कब तक? क्या हमेशा? क्या जब तक ये hot body cold ना हो जाए और cold body hot ना हो जाए? Is it till then? Until when? Yes. Yeah, please answer out. Hot to cold. Very good. लंबी class. Okay. Very good, Tanishka. Until the same level or temperature is equal. You're right. Until the temperatures are same. Heat transfer होता रहेगा. कब तक? जब तक दोनों same temperature पर नहीं पहुंच जाते. Yes. Now, you answer. Why does a metal spoon feel hot when you dip it in a hot cup of tea? आप अगर, है ना, imagine करो, एक metal spoon है and you keep it in a hot cup of tea. थोड़ी देर बाद if you try to pick up the spoon, it is very hot. Why? क्या हुआ इसमें? What happened here? Yes. Very good. Transfer of heat. Because it is steel. Transfer of heat happened over here. चाय गरम थी. Means the tea had a lot of heat energy. Spoon कुछ ऐसे मटेरियल का था which kind of made this heat transfer possible. There are materials which can actually make heat to get transferred, right? So यहां बोलते हैं इसको conduction. The first method of heat transfer, conduction. गरम गरम पतीली है, you touch it. You touch, let's say, in your kitchen, your mom is making, or let's say your mom is cooking something, है ना, कुकर पे चावल चढ़ा दिया, मान लेते हैं. Let's say rice is being cooked on the cooker. You came और आपने बोला अच्छा गरम है क्या? गरम है, right? You touched. What happens when you touch things? Heat transfer. कौन सा? We have given this a name. एक नाम है इसका. We call it conduction. हाथ जलेगा, सही बात है ना? Conduction, in which transfer of heat due to vibration of particles. Heat क्या था? सर particles का vibration. So how this
How this transfer of heat happens? I am the spoon. I am a particle in the spoon. Okay. वो है चाय और ये है स्पून का दूसरा एंड. इमेजिन ठीक है, वो रही चाय, वो है स्पून का दूसरा एंड, एंड आई एम जस्ट अ पार्टिकल इन द स्पून. ठीक है. माय जॉब इज टू ट्रांसफर द हीट. हीट वहां से आ रहा है, एनर्जी है ना, हीट एनर्जी वहां से आ रहा है, एंड इट इज मेकिंग पार्टिकल्स टू वाइब्रेट vigorously. मैं क्या करूंगा? इफ आई गेट द हीट आई विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, लॉट वाइब्रेटिंग है ना, लॉट मोर वाइब्रेटिंग. आई विल स्टार्ट पुशिंग माय नियर बाय पार्टिकल्स. आई विल नॉट मूव. I will not move. मैं यहां से उठ के वहां नहीं चला जाऊंगा. I will stay at my position, but I will start vibrating vigorously. I will start pushing my nearby neighbors. ठीक है. This is what we call as conduction. Conduction के अंदर particles उठ के चले नहीं जाते. Conduction के अंदर particles don't move altogether. What they do is they vibrate. Yes, it requires a medium, obviously particles, है ना. And predominant mode of heat transfer in solids. Particles पोजीशन नहीं छोड़ेंगे, they will just vibrate. It happens mostly in solids. Yes, solids में ये predominant mode of heat transfer है. It needs a medium. Particle क्या है? Particle तो medium है, right? It needs a medium. Predominant mode in solids. Particles don't move, they only vibrate. And yes, that's it. Conduction के बारे में इतनी knowledge होना काफी है. Any doubt till now? Come on. Yes. Very good. What is medium? Ankit, medium could be anything. Could be any metal, right? Could be anything. आप अगर कुछ भी बोलोगे, सॉलिड्स के अंदर कंडक्शन से हीट ट्रांसफर होगा. कॉपर ले लो, आयरन ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, व्हाटएवर यू टेक. These are what? Different materials. Materials or medium, same. Okay? Correct? Yes. बच्चा, I know. Voice might be a slight issue. Use earphones. Use earphones. It'll be helpful because in my phone I'm listening ना, उतना दिक्कत नहीं है, right? The team is still trying, make sure, but you keep learning, है ना. Learning में बाधा नहीं आनी चाहिए. Let's move. Come on. Yes. Predominant. विघ्नेश बच्चा, predominant मतलब मेजरली, ज्यादातर सॉलिड्स में ये सबसे बड़ा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है. प्रीडोमिनेंट मतलब जो डोमिनेट कर जाए बाकी सबको. सबसे ज्यादा इसके अंदर कंडक्शन होता है. सॉलिड में सबसे ज्यादा क्या होता है? कंडक्शन. करेक्ट. ठीक है, फाइन. सो दिस इज अबाउट कंडक्शन. ऑलराइट, अब कंडक्शन की बात करें, सो दिस इमेज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. कंडक्शन कैसा है? दिस इज लाइक दैट. यू माइट हैव सीन दोस वीडियोस जहां पर हम लोग समटाइम्स ना, जब घर बनते हैं, आपने देखा है कभी कभी ब्रिक्स कैसे ट्रांसफर करते हैं. लेट्स से आई हैव टू ट्रांसफर, है ना, जो लोग काम करते हैं उनको अगर ईंटें ट्रांसफर करनी है, आपने देखा है कि वहां दूर पहुंचानी है ईंट, तो लोग क्या करते हैं? एनीबॉडी कम ऑन रिकॉल. बहुत सारी मूवीज में हुआ है. स्वदेश देख लो, आई डोंट नो, लॉट ऑफ मूवीज यार, मतलब मैंने तो देखा है, बट मेरे को स्वदेश तो पक्का याद आ रही है. उसके अंदर ऐसा मैंने देखा हुआ है. यस गौरव बच्चा, यू विल गेट द नोट्स. रिलैक्स एकदम. सी, नोट्स के लिए आई एम टेलिंग यू, एवरी सेशन के लिए इफ आई गिव यू नोट्स उतना हेल्पफुल नहीं है. For complete chapter, we'll give you very concise notes with proper links of the sessions also. This is a new thing we are starting. Relax, आपको मिल जाएंगे. They pass to one another. Conductor, insulator, हाँ, yes, you're right. Conductors majorly solids, you can say. Solids के अंदर सबसे ज्यादा होता है conduction. ठीक है? They pass it to each other. एक बंदा लेगा ईंट यहाँ से, इसको देगा. ईंट लेगा, इसको देगा. Right? Same thing these kids are doing. Taking the water from the well, and every person is passing the bucket to the other person. That's how the transfer of heat happens in conduction, right? This was about conduction. Now there's a question for you. It's said to be a poll question. Let's see. Okay, let's see. Come on. If the arrow shows the direction of heat transfer, which among the following is true for conduction? Yes, come on. Can air do conduction? Mishika, yes. Any medium, it can do conduction.
Yes, come on. I gave you a poll. A, B, C, D, 4 options. A, B, C, D, 4 options I have given you in the chat. Come on. If the arrow shows the direction of heat transfer, which among the following is true for conduction? A, B, C, D. Look at them very carefully and then decide. Yes, come on. Bilkul, I remember you. Please, Priyanshu, ask the bacha. And in case I miss the doubt, it's okay. I'll give you specific times. अपना doubt copy करके रखो एक जगह. When I tell you, because phone में ना हर बार मैं phone देख के नहीं काम कर सकता हूँ, so that's why I might give you time. At that time, you just paste the doubt, है ना? ठीक है? चलो, I think you guys have enough time. I'll give you 5 more seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Option C is 82%. You're right. Look at this. ध्यान से देखो. Rod A at 25, Rod B at 85, Rod A at 25, Rod B at 85. कौन किसको देगा? हीट कौन किसको देगा? जिसका हीट ज्यादा होगा. किस पे ज्यादा होगा? जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा. So the one at high temperature will give the heat to the one at low temperature. तो ये तो कंफर्म है कि 85 वाला 25 को देगा. कब देगा? When? क्या दूर से देख देख के दे देगा? हीट ले लो मेरे से. हीट ले लो यार. थोड़ा हीट ले लो. अरे भाई पास तो आओ. Give me the heat, then only I will take, right? So that's why. They are not touching each other. No contact. No contact. Yes, there is a contact. And yes, there is a contact. But the problem is arrow is wrong. Right? Option D के अंदर arrow तो गलत हो गया. है ना? सच बात है. भाई arrow is wrong, which means this is not a correct answer. No contact. There is no contact. So option C becomes the correct answer. एकदम ठीक है ना? Any problem in this question? Whether there is any medium? एकदम सही. सही बात है. ठीक है. Hello, Parnak. My name is Saurabh Bacha. Everybody, if you are understanding everything clearly till now, everybody make sure to subscribe to the channel. If you are someone new, आप अगर नए हो, subscribe button press करो, because केवल पढ़ाई से मतलब है. कोई सामान नहीं बिकेगा यहाँ पे, है ना? Relax, पढ़ाई और only पढ़ाई. मस्ती भी करते हैं हम लोग, but पढ़ाई जरूर करते हैं. That's very very important. And not just पढ़ाई है. We do everything. समर कैंप चल ही रहा है तुम्हारा इंग्लिश का, डोंट वरी. बाकी साइंस सब्जेक्ट का आ रहा है, थर्सडे को मिलते हैं हम लोग. Yes, everybody. So, with this, let's move forward. Conduction की कहानी हो गई. Option C is the correct answer. अब conductors and insulators. Not every metal conducts. ऐसा नहीं होता ना. आपका जो कुकर है, it is made of let's say steel or aluminium, but उसका हैंडल कुछ अलग होता है. ब्लैक कलर का होता है ना? The handle is something different. Yes, noticed? कभी वुड लगा होता है. तवे जो होते हैं, लोहे के तवे होते हैं ना, उनमें वुड लगा होता है. Remember? Yes. Not every metal transfers heat equally good. हर मेटल बढ़िया से हीट ट्रांसफर नहीं करता, और हर मटेरियल नहीं करता. कुछ होते हैं कंडक्टर. नाम को देखो. Just look at the name. Conductor, which can conduct, which can transfer the heat. Insulator, जो insulate कर सकते हैं, which can not transfer the heat, है ना? Which are a bad conductor of heat. कंडक्टर में क्या होता है? Like metals, silver, copper, iron. Metals mostly good conductors है ना? एकदम relax. Insulator की बात करें, it does not allow heat to pass through it. जैसे कि silver, wood. Silver नहीं है यहाँ पे, glass आएगा. This is glass. Glass, wood, and plastic. Okay. This is glass. Glass, wood, plastic. These are what we call as insulators. They will not conduct the heat. Okay. Basic question. What will come? Give examples of conductors and insulators. Conductors क्या होते हैं? Insulators क्या होते हैं? And give 2 examples each. Very simple, very basic question, and all of you can answer. है ना? कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तक तो. Correct? Yes. All right. Air is, yes, you are right. Air is also an insulator. It's a very good insulator actually. No, Pavani, that was a mistake.
This was not silver, it was glass. Wrongly kept at silver. Yes. Ankit, most metals are conductors. I think lead is not that good of a conductor, but yes, most of the metals are good conductors. Clear? Right? चलो, अब बात करते हैं practical applications की. Where do we use conduction in practicality? Real life में सर conduction कहाँ use करते हैं? अभी तुमने बात करी थी किचन में खाना बनाते हुए, है ना? हर जगह जहां जहां हमको गर्म लगता है टच करने पे, that is conduction only. Thermometer. You touch the thermometer. आप थर्मोमीटर बिना टच किए क्या टेम्परेचर ले सकते हो? एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस टेम्परेचर गन, अबाउट दिस थर्मोमीटर, द क्लिनिकल थर्मोमीटर, मरकरी वाला. नो. कंडक्शन, स्टील यूटेंसिल्स, आयरन, प्रेस करते हो, टच करके करोगे ना, दूर से थोड़ी प्रेस होगा, राइट? सो कंडक्शन इज वेरेवर यू टच एंड ट्रांसफर द हीट. सिंपल सी बात है. इंसुलेटर्स में वुलन क्लोथ्स, क्यों पहनते हो वुलन क्लोथ्स? व्हाई डू यू वेयर वुलन क्लोथ्स? Because they are not a good conductor. Why? उसके अंदर एयर ट्रैप होता है. इस पे हम और बात करेंगे, डोंट वरी. वुडन हैंडल. If your cooker or let's say your iron tawa did not have that wooden handle, क्या आप उसको पकड़ पाओगे? Right? When you are cooking, do you think you can touch it? नहीं. This is for our own safety. So we as humans are very smart. हमको जहां यूज करना था कंडक्शन, हमने मेटल्स लगाए. जहां पर हमको अपनी सेफ्टी के लिए we had to protect ourselves, we used insulators, है ना? We figured out ये इंसुलेटर है, ये कंडक्टर है, इसको जहां जहां लगाना है मेरी मर्जी से मैं लगा सकता हूँ, so that I can use them better for our own convenience. and इसीलिए ह्यूमन स्मार्ट भी है यार हम लोग, है ना? सच बात है. Fur, animals have fur to protect them from extreme temperatures, right? I would say cold basically. Quilts, blankets, right? Very easy. So हमने बात करी. Yes. Correct. Pan. Yes, you're right. Pan. Roti pan. Huh? Okay. All right. Come on, everybody. One more question for you. In the given arrangements, pin P and Q are fixed to a glass rod and an iron rod respectively. This is the glass rod and this is the iron rod with the help of wax. In which case is the pin likely to fall? ग्लास रॉड, आयरन रॉड, पिन, यहां पर भी है पिन, ठीक है? किससे चिपकाया हुआ है? वैक्स के साथ. दिस इज एन एनसीईआरटी एक्टिविटी बाय द वे, एंड वी हैव एक बायजूस का ना एक्सपेरिमेंट शॉट भी है इसके ऊपर. ओके, वी हैव कैंडल ओवर हियर एंड देन वी हैव 4 ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग ओनली केस 1, सेकंड इज सेइंग बोथ केस 1 एंड केस 2, थर्ड इज सेइंग neither case 1 nor case 2, and last one is saying only case 2. Yes, come on. D D D D D A. Okay. Question है, in which case is the pin likely to fall? Likely to fall है भाई. Study German. Yes, you're right. Flying knowledge. Water is conductor. See, water also conducts. That's true. But we'll come to this. Liquids, water. Conduction होता है water में. You cannot say नहीं होता है. Arya, you're right. Humans are also good conductor. Okay, everybody, nice. ध्यान से देखो. Iron है और glass है. So all of you are saying D, and actually you are correct. Why? Glass is a bad conductor, है ना? Glass is not a good conductor. तो क्या होगा? You keep heating from this side. Glass बोलेगा heat हम transfer ही नहीं करेंगे. I will not transfer the heat. Why? Because I don't like transfer heat. I'm an insulator. मेरा काम ही नहीं है जी. मेरी जॉब ही नहीं है ये. मैं क्यों ट्रांसफर करूं, है ना? तो क्लास में तो बोल दिया मैं नहीं करूंगा ट्रांसफर, तुम्हें जो करना है करो. अब वी हैव वैक्स एंड पिन ओवर हियर. वैक्स को हीट मिलेगा नहीं, इट विल नॉट मेल्ट. दिस इज आयरन. आयरन को जैसे ही हीट मिला, आयरन बोला टेक द हीट, लेके जाओ, वापस दूर ले जाओ हीट को, है ना? आयरन का जॉब क्या है? आयरन जॉब इज आई हैव टू ट्रांसफर द हीट. आई एम अ गुड कंडक्टर. इट विल ट्रांसफर द हीट. वैक्स विल गेट द हीट, इट विल मेल्ट, एंड दैट्स हाउ द पिन विल फॉल डाउन. Why option B is the correct answer. Clear? है ना? Easy एकदम. Easy question था. Hello. वरना बचा notes available है. We'll give you the compiled version of notes, है ना? एकदम. बाकी पुराने notes available हैं. Don't worry. If you want, we can give it to you. But मेरे को लगता है कि अगर मैं 3 सेशन लिया
और आपको तीनों के अलग अलग नोट्स मिल गए, आपका काम बहुत बढ़ जाएगा. इंस्टेड व्हाट आई एम थिंकिंग इज we'll finish a chapter, we'll give you compiled notes of the whole chapter, and then in those notes we'll give you proper links of the sessions. पहला ऑप्शन अच्छा है, हर सेशन के नोट्स पकड़ा दिए जाएं, या फिर दूसरा ऑप्शन बढ़िया है जहां पर आपको पूरे चैप्टर का एक बार में नोट्स मिले, इसके अंदर सेशन के लिंक्स हों. What do you think is more convenient for all of you? Everybody, I'm asking from you. Come on. Priyanshu, yes. Our body also can transfer the heat. Second, huh? Very good. I also expected. So, पिछला क्वेश्चन बेटा, पिछला क्वेश्चन यही था, ग्लास रॉड और आयरन रॉड, पिन कहां पर पहले गिरेगा? आयरन रॉड में. क्यों? बिकॉज आयरन रॉड विल कंडक्ट. दैट वाज द क्वेश्चन. चलो, अब लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन व्हिच आई लेफ्ट अनअटेंडेड. मैंने ये बात छोड़ दी थी. Why do we wear woolen clothes? Come on. Why do we wear woolen clothes? मैं छुपा देता हूँ. Why do you wear woolen clothes? सर्दियों में. अभी तो I understand it's summer season. Even about thinking, है ना? When you think of woolen clothes nowadays, पसीने छूट जाते हैं. I know this is summer season. I'm talking about winter season. Let's imagine. Imagine करो woolen clothes को. गर्मी लग रही है. Why do you wear woolen clothes in winters? Yes. They keep us warm. Why? Okay. अमीर बच्चा, notes I'll give you on Telegram. एकदम रिलैक्स. टेलीग्राम पे ना I'll give you a proper sheet. उसके अंदर लिंक रहेगा, आप डाउनलोड कर सकते हो और वो पिन कर देंगे. I'll make a short on this tomorrow. Don't worry. I'm good. Sir, radiation. हाँ, अगर I'll come to that. Because of the gaps in cotton. Okay. Everybody, good try by the way. Very good. Yeah. I like it when you try, है ना? And if you also like the session, please make sure you press the like button. चलना. I don't need to tell you. बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. अब सुनो, देखो. Yes, wool is a bad conductor. That's true. लेकिन एक चीज ध्यान दिया है तुमने? All the woolen clothes, all your jackets, they're kind of puffy. क्या डिफरेंस है एक कॉटन की बेडशीट में और एक वुलन बेडशीट? कॉटन की बेडशीट को व्हेन यू फोल्ड, वो इतनी सी हो जाती है ना, इट टेक्स सो लेस स्पेस. एंड व्हेन यू फोल्ड अ वुलन बेडशीट, क्या होता है? उसको यू कैन प्रेस, है ना? इट इज पफी, है ना? थोड़ी फूली सी होती है. एम आई राइट? यस और नो? टेल मी, कम ऑन. एम आई राइट? यस. दिस टू. दिशा, यू आर राइट. 92 watching, it's likes only 62. Come on यार guys, come on. इतना ढील नहीं होना. पूजा, yes, don't worry. Come on यार, but I think it's going fine. No, बात करते चलो. Yes, very good. Yes. गोल्ड, हाँ बच्चा, गोल्ड भी कंडक्टर ही होता है. करेक्ट है ना? सच बात है. क्यों? Because of air trapped inside. और पता है, whatever material and wherever you use materials to insulate yourself from cold, air is the best. Best होता है इसमें air. Air is a bad conductor of heat. Bad conductor. Wool has air pockets in between. Air क्या करता है? Air acts as insulator. Your body produces heat. है ना? बॉडी से हीट निकलता है. When do you feel cold? When the heat of your body is getting lost in the environment. आपको पता है ठंड क्यों लगती है? आपको ठंडा कोई चीज क्यों लगता है? क्योंकि आपकी बॉडी से environment हीट लेके जा रहा है. If somebody takes the heat from your body, you feel cold. What is the job of this woolen cloth? It has air pockets and it acts as an insulator, which means it forms a blanket over your body. Heat बाहर निकल ही नहीं पाता है, right? So from your body, let's say this is you, heat should not go out, right? Heat should not go out, and this is what the wool does. It like traps the heat of your body inside. तो बाहर का environment जो कि ठंडा है, the atmosphere outside is cold क्योंकि सर्दियां चल रही हैं. Cold environment will not be able to take the heat of your body, and that's how you will feel good. You will feel warm, है ना? इसी तरह से ये काम करते हैं. यही रीजन भी है. The houses, the roofs are made of hay traps. कभी झोपड़ियां देखी है तुमने? Tell me, come on. Have you seen like very primitive mud houses? देखे कभी? Come on. मड के हाउसेस देखे?
और आई थिंक पिक्चर्स में देखे होंगे शायद, मे बी नॉट इन रियलिटी, गाँव जाओगे तो अब तो नहीं होते, बट पहले होते। हाउसेस के ऊपर ना दे कीप दोज हे क्या होता है? वो सूखी घास, करेक्ट? दिशा, यस, आई एम फ्रॉम यूपी बच्चा। आकाश, I'll take this doubt बच्चा, डोंट वरी। यस, करेक्ट। पूजा, रिलैक्स बच्चा। पूजा, you tell me what the problem is in the comment section. No, I'll take it up. And don't worry, we'll try to fill those gaps. कहीं कहीं दिक्कत होगी, relax. But comment section use and tell me the problems, okay? Fine, yes. तो ये हे के साथ क्या होता है? Hay is what? सूखी हुई घास. It also has these air pockets. So what it does is it keeps it cool in summers and warm in winter. समर्स में क्या चाहिए? अब सोच के देखो, समर में क्या है? बाहर गर्म है, आई डोंट वांट दैट। बीच में मेरे को बाउंड्री चाहिए, आई वांट समथिंग टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द हॉट एनवायरमेंट आउटसाइड। क्यों? बाहर तो गर्म है, समर चल रहा है, राइट? आई विल यूज द हे, इंसुलेटर, एयर पॉकेट्स, है ना? विंटर में क्या होता है? बाहर ठंडा है, मेरे को ठंडा टच नहीं करने का, आई डोंट वांट टू टच दोस कोल्ड एनवायरमेंट, राइट? आई वांट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, आई वांट टू सेव माई हीट। Insulator again. So right, insulators, that's how they prevent us in summers and winters both. ठीक है, बढ़िया, clear? चलो, let's go forward. But बचा, in semi-solids you will get a mix of conduction and one more. Now let me ask you something. Why are ACs placed at the top of a wall inside a room? So conduction we all have experienced. But you know what? It is not the only mode of heat transfer. Let's think about it. आजकल गर्मियां हैं, and lot of you might have been, using ACs. देख रहे होगे, कहीं भी मॉल में जाते हो तो AC हमेशा ऊपर लगाते हैं. I also have a AC over here जिसकी आवाज आ रही है. कहाँ पे? उधर कहीं है ना? ऊपर AC लगाते हैं. कभी देखा है किसी को नीचे AC लगाते हुए कि नीचे से ठंडी हवा आएगी, मजा आ जाएगा? Have you seen someone? Yes. Because very good. Cool air falls down, hot air goes up, and it can spread across the whole room. Very good, very good. तेज बच्चे. Yes, you're right. AC का काम क्या है? Air conditioning. It gives you cold air, है ना? अब cold air क्या होता है? Cold air is heavy. Have you seen? There is a shot on the channel, hot versus cold. कितने लोगों ने देखा हुआ है वो shot? Have you seen that shot? Hot versus cold. उसके अंदर क्या रहते हैं? 2 ग्लास रहते हैं, हॉट वाटर का, कोल्ड वाटर का. अगर कोल्ड नीचे रखो, हॉट ऊपर रखो, नथिंग विल हैपन, है ना? वो मिक्स नहीं होगा. अगर आप कोल्ड ऊपर रखो और हॉट नीचे रखो, इट विल मिक्स. कितने लोगों ने देखा है वो हॉट वर्सेस कोल्ड? यस, कम ऑन. यस, वेरी गुड. लास्ट ईयर देखा था ना, 4 PM टुडे. यस, सेम थिंग. कोल्ड मटेरियल्स, they have higher density, है ना? They will sink down. हॉट चीजें वो ऊपर उठती हैं. क्यों? कोई चीज को गर्म करोगे, it will expand, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा और मास उतना ही रहेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, राइट? So that's why it will rise up. बेसिक क्या समझ सकते हैं everybody? Listen to me. Hot things have lower density, cold things have higher density. We can generalize this more or less. कर सकते हो, ठीक है? Air conditions, they give you cold air, and that's the trick. Convection, another very important mode of heat transfer. Convection. Conduction क्या था? जहां पर टच करना पड़ता था, है ना? That's how the heat transfer है. Convection में क्या है? Convection में भी टच करना पड़ता है, बिना टचिंग के कन्वेक्शन नहीं होता है. बट एक डिफरेंस है. कंडक्शन में क्या होता था? I am a particle, I will take the heat and give the heat, take the heat and give the heat. In convection what happens? In convection, transfer of heat happens by actual movement of particles. I will take the heat and I will run away. समझ रहे हो? कन्वेक्शन में क्या होगा? मैं एक पार्टिकल हूं, है ना? I will take the heat, जेब में डालूंगा और भाग लूंगा यहाँ से, ठीक है? So that's what happens in convection. Particles move. Heat transfer happens by actual movement of particles, right? And liquids are predominantly heated by convection. इसको मीडियम चाहिए? Convection requires medium, yes or no? Yes. The only difference from conduction is conduction के अंदर particles don't change their position, they don't move. In convection, the particles move. Yes, correct, है ना?
you're right. Wherever liquids are there, no, convection is there. So you are telling me कि air के अंदर हमको गर्म लगता है. Air कैसे गर्मी लेती है? By touching from the ground, right? From the ground, the air kind of takes the heat, and that's how convection happens. गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, ठंडी हवा नीचे आ जाती है. Yes, because air particles can move. Solid के particles cannot move. तो इसीलिए वो मूव नहीं करेंगे, बट लिक्विड में पार्टिकल्स कैन मूव हियर एंड देयर, सो दैट्स व्हाई दे विल टेक द हीट, दे विल गो अवे, है ना, वो दूर चले जाएंगे. फाइन, यस, दिस इज व्हाट वी कॉल एज कन्वेक्शन. एंड आई नो यू माइट हैव सीन, एक चीज बताओ, तुमने देखा है कभी कभी, इफ लेट्स से यू आर मेकिंग टी, आप कैसे, चाय बनाना कितने लोगों को आता है? डू यू नो हाउ टू मेक टी? सच बता ना, कभी चाय बनाया है लाइफ में? बहुत ने बनाया होगा यार, हम तो बनाते थे जब बच्चे थे. यस, कन्वेक्शन आई विल एक्सप्लेन मी. Priyanshu, I'll take this question, but not today, but it's a very good question. I'll पक्का take it. Yes, no, अच्छा सुनो, क्या करते हो, कैसा, how do you make चाय? पहले you take a pan, yes, then you put water, फिर क्या करते हो, चाय पत्ती, थोड़ा सा चीनी, फिर अदरक, maybe if you like ginger, and then you put इलायची, correct, race, cardamom, and then you wait. You don't add the milk suddenly, then you wait. कभी normally keep looking, ध्यान से ना देखते रहना, you will notice those tea particles, right, those tea particles, they will start moving ऐसे ऐसे. देखा है, कितने लोगों ने देखा है, the tea particles they will start moving, ऐसा लगता है पानी के अंदर ना कुछ मूवमेंट हो रहा है. Have you seen this? Tell me, yes or no? Everyday core is tea making. Yes, doing tea recipe. Yes, you're right. Nice, Anushka, है ना? Yes, हाँ, study German. I'm explaining, बच्चा, listen to me, है ना, clearly, right? ऐसा लगता है, it feels that in that water some movement is happening, and that's why these tea leaves or these chai patti, they are also showing movement. That's convection, right? So what happens, convection current में क्या होता है, listen to me carefully. Heat कहाँ से मिल रहा है? This pan is kept on the stove and it is getting heat from the bottom. नीचे से आग लगाते हो, you put fire from the bottom. All the particles, जितने particles नीचे हैं, right, all these particles, they first of all gain the heat, है ना, ये गर्म हो गए. So all these particles, they gained the heat. Then what happened? They move up. ये ऊपर चले जाते हैं, right? And we have the cold particles. जो ऊपर थे, the particles which were there on the top, they were cold, है ना? ये ऊपर आ गए, cold वाले नीचे आ गए. The cold particles will come down. So what are convection currents? Hot particles, they will rise, and the cold ones will come to the bottom. Right? That's how the heat transfer is happening. And this current, इसको बोलते हैं convection current, है ना? Hot ऊपर जाएगा और cold नीचे आएगा. This is called as convection current. So convection is the mode of heat transfer in which the actual movement of particles happen, and right, we get convection currents where the hot materials, hot particles move up and the cold ones come at the bottom to take their place. Correct? Clear ekdam? Yes. In convection, Ankit, particles to always vibrate, but in convection particles move. Vibration होता है ऐसे ऐसे, movement होता है ऐसे, चले जाना. Correct? Yes. नहीं, I have the pen is here. All right, ठीक है. चलो. अब डिफरेंस क्या है, कंडक्शन वर्सेस कन्वेक्शन. सी, कंडक्शन में इमेजिन दिस इमेज, दे आर ट्रांसफरिंग ब्रिक्स लाइक दिस, है ना. एक ने ब्रिक दी इसको, इसने ब्रिक दी इसको, इसने ब्रिक दी इसको, राइट. दिस इज कंडक्शन. बहुत बढ़िया. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, है ना, पानी लेके. अब कन्वेक्शन में क्या है, कन्वेक्शन में दिस बेचारा बच्चा, ही टुक द वाटर फ्रॉम हियर एंड ही रैन. ऐसा होता है ना जब घर में बड़े भाई बहन होते हैं, पानी लेके उधर जरा चाय, यार चाय हो गई किचन में, चाय लेके आना बेटी, भाग के जा एकदम, है ना, यार एक बार ये जरा पैसे लो, फटाफट दुकान से जरा सामान लेके आना. ऐसा होता है. दैट इज कन्वेक्शन, राइट.
This person took the water and he's running away. खुद ही लेके भाग गए. Heat ली and you run. That is convection. First one is conduction. Clear hai? See, whatever jokes I'll make, I want to make sure that you understand this phenomena. Clear? Yes, there is Alex. Huh, Alex. Correct? Yes. So convection current is nothing. It's just a cycle formed where hot particles rise up and the cold ones come down to take its place. This cycle is called as convection current. Okay? Clear? ठीक है? Conduction में particles vibrate. They don't move. In convection, particles move. Easy? Clear? चलो आगे आओ. यही रीजन है कि ACs are kept at the top. है ना? ACs ऊपर होते हैं और heaters नीचे होते हैं. ACs give you cold air. Cold air will settle down. है ना? Cold air ऊपर से आके नीचे आएगा. And that's how you will feel cold in the entire room. अगर आपने AC नीचे लगा दिया तो क्या होगा? You tell me something. अगर आपने AC नीचे लगा दिया, what will happen? What will your body feel if I had ACs in this room on the floors? क्या लगता है आपको? What will you feel? Anjali, sorry बच्चा, come on. Yes, will not get cold air, hot air. हाँ, दर्शिका बच्चा, because outside temperature is 25 डिग्री. आप हायर लेके आओगे तो वो नीचे हो जाएगा, आप लोअर लेके आओगे तो वो ऊपर हो जाएगा, है ना? गर्म चीज नॉर्मल पे आएगी और ठंडी चीज भी नॉर्मल पे आएगी, राइट? तो दैट्स व्हाई यू आर राइट. यू नो क्या होगा इफ यू कीप एसीज इन द बॉटम? आपके पैरों को लगेगी खूब ठंड, राइट? योर लेग्स विल फील वेरी कोल्ड. आपको नीचे लगेगा बहुत ठंडा है, लेकिन ऊपर की बॉडी बोलेगी कहाँ भाई, कहाँ ठंडा है? वेयर इज द कोल्ड? देयर इज नो कोल्ड, है ना? So all the cold air will settle down in the bottom. That's the problem. If you keep ACs, all the cold air will be on the floor. आप लेटोगे बस फ्लोर पे, है ना? आपको तब ठंडा लगेगा, आपके पैरों को ठंडा लगेगा. Your body will say कहाँ भाई, कोई ठंडा ही नहीं है, right? So that's why nobody does it. कोई नहीं करता, है ना? इतना लॉजिक सब लगाते हैं. Correct? Very good. चलो, one more poll question for you. Everybody read the question. I'll give you 4 options. Come on. Yes, come on. I have given you the poll. The cooling unit in a refrigerator is fitted at the top for the sake of convenience. Convenience मतलब कि यार, let's do, if I am a fridge manufacturer, I am a refrigerator manufacturer, let's keep the refrigerator section in the top. यार झुकना नहीं पड़े लोगों को, है ना? बर्फ निकालने के लिए लोगों को झुकना ना पड़े. Let's keep it at the top. To avoid convection currents, to keep it away from the hot compressor which is near the bottom. Last one, to cool the whole interior by setting up convection currents. What do you think? Come on. Okay. Yes. ध्यान से. Pavani bacha, convection is nothing. Convection is a mode of heat transfer in which the particles of medium, they move by taking the heat, and convection currents are set up, right? That's called as convection. Conduction क्या होगा? Conduction is a mode of heat transfer in which the particles of medium, they vibrate and transfer the heat to the next set of particles, right? That is conduction. Yes. Okay. I'll give you 3 more seconds. 3, 2, 1, and एक बात बताओ. ऑप्शन सी 47%,
ऑप्शन डी 41%। चलो ठीक है, लेट्स फॉरगेट अबाउट ए एंड बी फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो गलत है, टू अवॉइड कन्वेक्शन करंट्स भी गलत है। अवॉइड क्यों भाई? यू आर सेइंग टू कीप इट अवे फ्रॉम द हॉट कंप्रेसर व्हिच इज नियर द बॉटम। रियली? सच में? एक बात बताओ, रेफ्रिजरेटर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मिनट, इसमें एक चीज ध्यान देना, nowadays we have these, लेकिन अंदर से ना क्या होता है, when cold air comes here, the cold air settles down धीरे 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 धीरे, the cold air kind of settles down. If I give you cold air here, cold air settles down. अब आई नो बहुत लोग सोच रहे होंगे सर डबल डोर वाले फ्रिज में क्या, डबल डोर, तो कोल्ड एयर सेटल्स डाउन, कूलिंग एवरीथिंग इन बिटवीन, है ना, बीच में हर चीज से हीट लेके वो नीचे चली जाती है, राइट? सो दैट्स व्हाई वी कीप द अपर कंपार्टमेंट एज द फ्रीजर। और ये कन्वेंशनली पहले होता था कि जो हमारे सिंगल डोर फ्रिज होते थे ना, उसमें फ्रीजर ऊपर होता था। slowly we have double door, triple door, उसमें क्या होता है, cold air is coming from there also and in the middle also, लेकिन दोनों में ऊपर ही आती है, nobody give the cold air down, right? Yes, C is wrong. Correct बच्चों, C is not correct, हाँ? Option D is the correct answer. To cool the whole interior by setting up convection currents. It's okay. I know. Option C, technically it might have sounded fine because आजकल सिंगल डोर फ्रिज बहुत लोग के नहीं होते, ज्यादा डबल डोर या फिर ट्रिपल डोर ऐसे होते हैं। सिंगल डोर के अंदर इट वाज वेरी लॉजिकल, लेकिन दिस इज नॉट द एग्जैक्ट रीजन। आप सोच सकते हो, और कंप्रेसर भी एकदम ऐसे नहीं नीचे होता है, राइट? सो दैट्स व्हाई आप सोच सकते हो मे बी, बट ऑप्शन डी इज द मोस्ट लॉजिकल रीजन, है ना? ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इज नॉट द करेक्ट आंसर। क्लियर है? Everybody who made mistake in this question, cold air from the top will be heavy, it will settle down, cooling everything in between. उसके बीच में जो भी आएगा उसको ठंडा करती हुई नीचे सेटल होगी, है ना? That's a good thing. नीचे लगाओगे तो क्या होगा, कोल्ड एयर नीचे रह जाएगी, ऊपर कौन ठंडा करेगा? That's why. Okay, fine. To cool the whole interior. Clear? Yes. So option D correct answer है भाई. And you know what? Based on the same thing, you have very nice observations. Land heats up dash then water. Fill in the blank. Come on. Land heats up dash then water. कभी बीच पे गए हो? कभी बीच पे गए हो? एक चीज नोटिस करी होगी, अगर भरी दोपहरी में, और यू नो व्हाट, नाउअडेज इट्स द बेस्ट टाइम, अगर ये एक्सपीरियंस करना है, मुंबई, गोवा, पुरी, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, वेयरएवर यू आर, देखो नॉर्थ इंडिया वालों तुम तो बीच नहीं एक्सपीरियंस कर पाओगे, तुम बता रहा हूँ जो कर सकते हैं। कभी गर्मियों में ना, या बीच धूप में बीच पे जाना, व्हाट विल हैपन, पानी में एवरीबॉडी फास्टर फास्टर फास्टर, यस। हाँ सोहाना बच्चा, गोल्ड इज आल्सो कंडक्टर, गोल्ड हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, दैट्स ट्रू, बट इट्स आल्सो अ कंडक्टर, ओके? हाँ, दिन में आप जाना बीच पे, आप खड़े होके पानी में ना, when you are standing on the water you feel pani is good, the water of the sea is good, but when you have to cross the beach and go home, और आप नंगे पैर, है ना, you have not wear, you're not wearing a slippers, सैंड पे पैर रखना एक बार, और जो तुमको मजा आएगा, वाह 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 वाह, it's an amazing feeling, I'm telling you, it's a very amazing feeling. The sand nowadays in the noon time एकदम ऐसे उबलता हुआ सैंड होता है, it's like your feet touches the sand and you start running, आप भाग लेते हो। I'm telling you, I went to Goa, एक मेरा layover था, and that's when I realized, oh yes, correct, few days back, correct. So that's why land heats up faster than water. Beaches are the perfect time to experience this. ठीक है? नाइट में क्या होता है, at the night time what happens, रात में the land feels colder, वही बीच nowadays रात में ना आपको सैंड ठंडी ठंडी लगेगी, सैंड में यू विल पुट योर फीट इनसाइड द सैंड, और पानी लगेगा हल्का सा गरम गरम। लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर, लैंड हीट्स अप फास्टर एंड कूल्स डाउन फास्टर, वाटर heats up slowly slowly and cools down slowly slowly, ठीक है, slowly slowly,
Fine. And that's how you get two important things. Beach पे, if you start sitting in a shade, आप अगर shade में बैठे हो, बड़ी मस्त ठंडी हवा आती है. Remember, कितने लोगों ने ध्यान दिया है बीच पे ना ठंडी हवा आती है गर्मी के मौसम में भी बीच पे बैठ के, right? Yes, humidity is there. If you don't stand in the sun, you are in the shade, you will feel nice cold air on your face. That is called as the sea breeze. The breeze coming from the sea. रात में you will not get that feeling. Land से sea की तरफ we have the land breeze coming from the land. Okay. अब क्यों होता है? Everybody listen to me. It's a very very important, because from exam point of view these explanations have been asked quite frequently. ध्यान से सुनो. दिन में क्या होता है? Everybody. Land heats up faster, means the air touching the land will also get heats up. If the air will heat, it will rise. Low density है ना? The air will rise over the land. ऊपर ऊपर. अब the air which is in contact with the sea, this air is cold, है ना? It's a cold air. Hot air over the land is rising. Cold air over the sea is nice, sitting nicely. बैठी हुई है मस्त. ये hot air will move on this side and the cold air will move this side to fill the gap. अब यहाँ से hot air तो चली गई, cold air इसको fill करने के लिए इधर flow करेगी, right? And that's how this cycle will be formed. Hot air will rise above the land and go towards the sea. Cold air from the sea will come towards the land. ये hot air ठंडी होके यहाँ आ जाएगी, ये है ना, ये cold air गर्म होके ऊपर चली जाएगी, right? So this is a cycle. It's what? Convection current. This is like the biggest convection current. हमने जो देखा था पैन के अंदर तो छोटा था. This is the big convection current. Hot air from the land rises up. Cold air from the sea moves towards the land to take its place, and this hot air goes on this side. This is the sea breeze. है ना? ध्यान से देखो. If you are standing over here, if let's say you are standing over here, what will you feel? Air coming on this side. This is the sea breeze. रात में क्या होता है? रात में क्या होता है? Land is cold and sea is hot. Means the air above the sea. Yes. Means the air above the sea will be hot. It will rise up. It will rise up. यहाँ पर क्या होगा? The air above the land is colder. It will move this side. Correct? It will move this side. And this air will go this side. Right? So this is what? If you are standing over here, what will you feel? Air coming from the land towards the sea. This is the land breeze. Okay. Sea breeze कहाँ से चलता है? सर sea से land की तरफ. Land breeze कहाँ से चलता है? सर land से sea की तरफ. Right? So sea breeze and land breeze. This is happening because of convection. Clear है? Everybody, is this clear? Very good. Nice. ठीक है? है ना? You got it now? Easy एकदम. Now एक और question. चलो. This is the last question properly. I mean, माना के कंडक्शन है कन्वेक्शन है. यार एक बात बताओ. Sun is very far. The sun is very very far. Sun से अर्थ के बीच में एयर है क्या? From sun to earth, do you have medium in between? नहीं. But still when you stand in the sun, you feel hot. गर्मी में धूप में क्या तो गर्म लगता है. Nowadays तो you all know, स्कूल जाते होगे तुम या स्कूल से आते होगे, चिलचिलाती हुई धूप, ओहो क्या गर्म धूप आ रही है आजकल. You still feel hot. Why? Sun is very far. It doesn't have any medium in between. Conduction भी नहीं है, convection भी नहीं है. क्या है? Radiation. This is the third and very important another mode of heat transfer. Radiation. Sun इतनी दूर से gives you light rays, and these rays can travel in vacuum. They don't need a medium. Radiation की सबसे special बात क्या है? Conduction needs a medium. Convection needs a medium. Radiation no medium. I will do whatever I want. I will travel. Okay. It does not require a medium, and hot bodies radiate the heat. वो फंडा क्लियर है. जो गर्म होगा वही तो रेडिएट ज्यादा करेगा. Who will radiate more? Sir, hot bodies will radiate more. थर्मल कैमरा देखे होंगे तुमने. Have you seen those thermal cameras, thermal imaging? YouTube पे या फिर एयरपोर्ट्स पे भी होता है ना? Your body में hot parts they look red, cold parts they look blue, है ना? That is what because of radiation, right? है ना? So that's why we have three modes of heat transfer: conduction, convection, and radiation. Conduction needs a medium where particles vibrate. Convection needs a medium where particles take the heat and move.
Radiation does not require a medium, right? Chalo. This one, let's not keep it a poll question. You tell me as such. Which type of heat transfer can take place through a vacuum? Arey, बहुत easy है. I don't think we need a poll for this. Come on, everybody. What do you think? पूछने की जरूरत है. Which type of heat transfer can take place through a vacuum? Vacuum का मतलब क्या होता है? What is the meaning of vacuum? Vacuum means absence of particles. है ना? Nothing. Empty. Come on. Radiation. B. Obviously, B is the correct answer, right? One more question for you. Come on. What is the prominent mode of heat transfer in both the cases? Child 1, child 2. अच्छा, sorry, here. ये रहा child 1 और ये रहा child 2. हाँ, question. For child 1, what is the predominant mode of heat transfer? And for child 2, what is the predominant mode of heat transfer? Everybody, come on. What do you say? B, 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 B. Okay. D. Yes, come on. B, 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 B. अरे B बोल रहे हो क्या? ओके बच्चों, एक सेकेंड. Listen to me. एक चीज ट्राई करना. I want you to try something. To answer this question, I want you to experience. देखो फिजिक्स क्या बुक्स में लिखा होता है, बट एक्सपीरियंस ही फिजिक्स है, राइट? इफ यू एक्सपीरियंस, दैट इज व्हाट वी कॉल एज फिजिक्स. टेक अ कैंडल इन योर हाउस, है ना? एक बार कैंडल मस्त जलाओ कैंडल को. आई वांट यू टू ट्राई. कैंडल यहाँ है ना, दिस इज द कैंडल फ्लेम. हाथ यहाँ रखना दूर. यू विल फील हॉट. दैट इज द केस ऑफ चाइल्ड 2. उसने आंख के ऊपर हाथ रखा हुआ है. शी विल फील हॉट. और बहुत गर्म होता है. बात मानो, है ना? हवन के ऊपर हाथ कर दो तो बहुत गर्म होता है. ask you something. That candle, if you keep your hand over here, do you feel hot? No. Because hot air rises up. If you keep your hand up, the hot air will touch it and you will feel cold, है ना? But if you keep your hand on the side, hot air तो ऊपर जा रहा है. Convection कैसे होगा? Convection side में थोड़ी होता है. I don't take the heat and go to the side. I take the heat and I go up, है ना? अब मैं उड़ नहीं सकता हूँ, तो that's why I was taking the heat and running on this side, right? Heat and then you will go up. Understanding? So child 2, convection for sure. Child 1 is sitting on the side. Convection is not possible because he is sitting on the side. Side में hot air side में थोड़ी आएगा. Hot air will not come on the side. Hot air will rise up. So the correct answer, my friend, is radiation only. And for child 2, convection and radiation, because radiation is in all directions. Convection is in the upward direction. Is this doubt clear? Everybody, come on. Clear हो गया? Any doubt in this question? And you can experience this question. I'm telling you, believe me, you just need a small candle. एक candle चाहिए and you can experience this very nicely. बस हाथ मत जला लेना, please. Make sure. बिल्कुल, है ना? साइड में रेडिएशन होगा. रेडिएशन साइड में, ऊपर में, हर तरफ होगा. बट कन्वेक्शन केवल ऊपर होगा. क्लियर? राइट? यस. सो एक होमवर्क क्वेश्चन है. होमवर्क क्वेश्चन क्या? रेडिएशन एंड फैशन. Difference of radiation and fashion. Yes. Is radiation and fashion related? Heat transfer or style का कोई relation है? If yes, you tell me in the comment section. And if no, then also you tell me in the comment section. Let's see what we have learned today. That was the homework, by the way. Huh? We have learned about modes of heat transfer, conduction, convection and radiation. And we have, this is one more homework for you. एक और homework है. हीट ट्रांसफर एंड फैशन का क्या कोई रिलेशन है? अगर है तो क्या है? एंड सेकंड होमवर्क क्वेश्चन इज दिस. गो अहेड, ट्राई दिस आउट, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड यू नो व्हाट, we'll meet again in the next session. I hope you liked today's session, and if you liked, अगर तुमको समझ में आया, press the like button, and if you are new, subscribe button press करो और बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करो, so that you don't miss any session, है ना? अगर आप मिस करोगे तो आपको लगेगा अरे यार मेरा छूटता जा रहा है, मैं कैसे पढ़ूंगा, राइट? रेगुलर आना जरूरी है. एंड इफ यू आर रियली लुकिंग फॉर अ गुड प्लेटफॉर्म टू हेल्प यू इन स्टडीज, गो अहेड, सब्सक्राइब करो. डोंट बिलीव मी, सी एंड देन यू बिलीव योरसेल्फ. ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम, विल मीट अगेन. टेक केयर, है ना? सेमीकंडक्टर्स
सेमीकंडक्टर्स, यस, ओके, विल टॉक अबाउट दिस. कंडक्टर्स के बीच में एक और मटेरियल होता है, वो है सेमीकंडक्टर्स. वैसे सेमीकंडक्टर्स मोस्टली वी यूज दिस वर्ड फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स. यहाँ पर सेमीकंडक्टर वर्ड इतना यूज नहीं करते, दोनों दो ही होते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. ओके, चलो एवरीबॉडी, सी यू, टेक केयर. I hope you understand everything. Like, share and subscribe, and share it also, yaar, है ना? Share it with your friends. Thank you. Take care. See you. Bye bye. Like, share and subscribe. Chalo. See you. Bye bye.